Hi, so welcome to the fourth video of our analysis on world history. So we'll be talking about the fourth unit. In the fourth unit, we'll be discussing about nationalism and its impact upon Europe. We had already discussed the impact of French Revolution. So French Revolution से theme connect होगी starting from Congress of Vienna. So let us see the syllabus, trend, PYQ and sources. First part, when we talk about syllabus, here it talks about rise of nationalism in 19th century. So when we talk about rise of nationalism in 19th century, you have to always understand it starts from the defeat of Napoleon, then the European revolutions that we have in 1830, 1848, then eventually the process of unification of or the state building in Germany and Italy, and disintegration of empire through the emergence of nationality. तो ये वाला टॉपिक है एज सच, इसका कुछ डायरेक्टली आपको नोट्स नहीं मिलने वाला बिकॉज इट्स अ वेरी फ्रेगमेंटेड. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट एम्पायर्स स्पेसिफिकली, तो एम्पायर तो बहुत लोगों के थे, ठीक है. तो इफ यू सी द एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर, British Empire, French Empire, all these colonizers were having various kinds of empire, and during different times we see the dissolution of these various empires. तो ऐसे से कोई डायरेक्ट आपको सोर्स नहीं मिलेगा. If we see trend from the first part, rise of nationalism in 19th century, we have 8th question. There is one more theme which is hidden, but it is not given in the syllabus. That is the Eastern question. The Eastern question is about the rise of nationalism in Eastern Europe. As we can see that there was decline of Ottoman Empire and the rise of the nationalities of Eastern Europe like Serbia, Greece. तो उनके ऊपर भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो इसी हेडिंग के अंदर आ जाएंगे. इटली, जर्मनी 8 क्वेश्चन. जर्मनी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए 17. कंपैरिजन ऑफ इटली एंड जर्मनी, उस पर 2-3 क्वेश्चन आए. एंड फाइनली डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर. दिस इज अ वेरी जेनरिक काइंड ऑफ टॉपिक, तो ऐसा हम इसके लिए कुछ अलग से सोर्स नहीं देखेंगे. मैं आपको कुछ रेकमेंड कर दूंगा, बट ये थीम साथ साथ में चलती रहेगी. लाइक यू कैन सी Greek War of Independence was asked in 2019. Even the transformation of Japan was asked. All right, Lord Beaconsfield, उनके the Congress of Berlin, this is a famous Congress of Berlin or Treaty of Berlin under the leadership of Bismarck. Asian nationalism पे 1-2 क्वेश्चन है. तो nationalism is not only just linked to the Europe, and if we see how European nation in emphasizing the solidarity, the European nation dealing with Asian country inevitably give rise to feeling of Asianness. So the impact of European imperialism on the Asian nationalism, that is the theme. Crimean War, again it is related to the Eastern question. Greek War of Independence, Crimean War, Treaty of Berlin, ये सारा ईस्टर्न क्वेश्चन का पार्ट है. तो ये आपको ठीक से समझना पड़ेगा एक पूरा थीम समझ के, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पीरियड 1830 to 1871 वर द डिफरेंस बिटवीन लिबरलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म. अगेन जापान एंटर्स इन देयर. जापान पे ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा अब आते नहीं है, सिलेबस थोड़ा चेंज हो चुका है, बट फिर भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. Meiji restoration, and then eventually how the imperialism is going to rise, and they become the first modern power in Asia. Italy में बहुत basic क्वेश्चन है, जैसे this is the comment of Metternich that Italy was just a geographical expression. The conception of Mazzini, then the comment of Cavour remains one of the most important personality in Italian unification. तो उस पे क्वेश्चन आता है. Okay, then if we talk about Vienna Order or Vienna Congress 1815, that has already divided Italy in 1815. So once Italy becomes unified, it led to the destruction of the European order. So European order जो लिखा हुआ है, it is about the Vienna order. So connection of themes. Okay, obstacles in the unification. Same statement again. They have stopped me from making Italy from diplomacy. All right. Then eventually you can see stages of which led to unification of Italy. तो काफी सारे stages हैं, हर stage में किसी न किसी का अलग से point है. If we see Germany, role of Bismarck, this whole debate, blood and iron versus coal and iron, आपको समझना पड़ेगा. Okay, role of Bismarck in state building, battle of Sedan, its impact. Then they have also compared this 50 years history. कि 1871 was the year of great triumph and 1919 was the year of chastisement. तो comparison करके भी आपको question मिल जाएंगे with respect to Germany, because this is along with this, there is also a theme of balance of power, because France remains the most important nation from 1789 till 1871. In 1871, when Germany gets unified, eventually the balance of power shifts and Germany becomes the most important power in the whole of Europe. Then which factors led to German unification? Then from 1848, that there was an idea of little Germany versus bigger Germany. That is what they are talking about, narrow nationalism. All right. And in 1848, how the revolution failed in Germany as well as Italy. That is mentioned here. Coal and iron versus blood and iron. ये बहुत ही basic theme है आपकी. And then this isolation of France, which was done by the various alliances of Bismarck, उस पे question आ जाता है. So same question. One is about role of Napoleon,
and how the role of Napoleon was more of an imperialist than that of a unifier versus role of Bismarck. तो इसको आपको देखना पड़ेगा. Then Bismarck created a new Germany with the policy of blood and iron, and political unification was solely done by Bismarck. So Bismarck यहाँ पे सबसे ज़्यादा overarching personality है इस पूरे टॉपिक में अगर आप देखोगे. Then बैटल ऑफ सेडान, आपको 3-4 बैटल याद रखनी पड़ेंगी. बैटल ऑफ सेडोवा, बैटल ऑफ सेडान, these are the most important one. Now the irony of the history, how Napoleon was the creator of modern Germany. So initially there were two major states. Austria was there, and along with that we had the Prussia, and the rest of the German states. There were around 300 states, and they were merged into 39 states, and a confederation of Rhine was created. So this was the role of Napoleon. Even though it was from the imperialist point of view, he wanted to use this union of 39 states against Austria and Prussia. But still he is often considered that he was the creator of modern Germany. तो वही सारा सेम थीम इससे बार बार रिपीट हो रहा है. Comparison of this कि what kind of you can say give and take can be seen between Italy and Germany during the unification process. Its impact on international politics. One became very prominent, other became relatively very weak. Comparison of Cavour and Bismarck. तो ये सारी थीम्स आपको इस टॉपिक के अंदर करनी है. If we see disintegration of empire through the emergence of nationality, ये टॉपिक बहुत ही आउट से बहुत वाइड है. यूरोपियन एम्पायर्स आपको स्पेसिफिकली देखने चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी का आपने देखना है, और यू हैव टू सी ऑफ द ऑटोमन एम्पायर विच कवर्स एशिया एज वेल एज ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप. तो बहुत सारे एम्पायर हैं ऐसे को डायरेक्टली आप इसमें. तो ईस्टर्न क्वेश्चन पे इस पर 2-3 बार क्वेश्चन आया है. टर्किश रेनेशा अंडर केमाल पाशा, हाउ या अबॉलिश. इंडिया में खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था, वो उससे रिलेटेड है. ईस्टर्न क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता रहता बार बार. ये सारे एरियाज हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर. एबीसी सोर्सेज, तो रंजन चक्रवर्ती में आपको इजीली राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी में यूरोप का मिल जाएगा इस चैप्टर में. ठीक है, ये चैप्टर आप देख लेना. देन चैप्टर नंबर 5 में द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म, इटली एंड जर्मनी बोथ आर मेंशन्ड हियर. एंड अगर हम बात करें डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स, देखो एक स्पेसिफिक पार्ट आपको मिल जाएगा इग्नू में. आप पढ़ना चाहो इसको पढ़ सकते हो. फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स जर्मनी एंड इटली, तो वो तो उसका सेकेंड सोर्स बन गया. दिस चैप्टर इन नॉर्मल लॉ दैट यू कैन रिमेंबर, चैप्टर 24 द एंड ऑफ द यूरोपियन एम्पायर. तो ये थोड़ा सा डीकोलोनाइजेशन स्पेसिफिक टॉपिक है, वहाँ से कुछ आपको इसके बारे में मिल जाएगा. जैसे जो टॉपिक है आपका टर्की का स्पेसिफिकली, अब वो सिलेबस में उतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं है, तो वहाँ से यूपीएससी को ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछा नहीं. बट ईस्टर्न क्वेश्चन ऑलवेज रिमेन्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन. दिस रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम. तो आपको समझना है कि what was the policy of Russia to increase its sphere of influence in the Eastern Europe, how this was not like the Austria-Hungary, Ottoman Empire was declining, what was the interest of Britain. तो ये पूरा एक ईस्टर्न क्वेश्चन जो है ये रंजन चक्रवर्ती में चैप्टर भी दिया हुआ है ईस्टर्न क्वेश्चन पे. तो आप चाहो तो उसको भी इसके साथ में पढ़ सकते हो, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी. ऑलराइट, सो if you wish to get mentorship from our counselor, if you wish to attend the webinar और strategic documents अगर आपको चाहिए तो आप रजिस्टर कर सकते हो. Then watch all these videos की ऐसा ना हो सिर्फ 2 टॉपिक देख के छोड़ दिया और बाद में फिर कह रहे यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा. कंप्लेन कोई भी कर सकता है. आप कोशिश करो, रिजॉल्व करो अपनी सारी क्वेरीज को. रीड ऑल दीज इंपॉर्टेंट एरियाज दैट आई एम प्रेस्क्राइबिंग यू, एंड फाइनली इन सबको पढ़ लो, अपने एरियाज को ईयरमार्क कर लो. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू हैव वेबिनार विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेसिफिक टॉपिक, तो आप उनको पूछ भी सकते हो. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट. आई एम डूइंग दिस सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आ रहा सर ये सीरीज़ प्लीज़ इसको कर लो, सो दैट हम सबको हेल्प मिल जाए. सो मेक श्योर आप इसको करो अच्छे से. इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ है, यू कैन वॉच ऑल ऑफ देम वन आफ्टर द अदर, बिकॉज 1-2 घंटे के अंदर जो आपको प्रोडक्टिविटी मिलने वाली है, इट इज़ नॉट एनीवेयर ऑन द यूट्यूब. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट.